नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ पावर. सो देखते हैं टाइप्स ऑफ पावर क्या है. ये टाइप्स ऑफ पावर. Now in electrical we will have three types of power, mainly three types of power. So let's see what they are. So the first power is called active power, and the next name is true power, and the next name is real power. Okay, so the first type of power is known as the active, true and real power, and it is shown by the symbol P. Okay, the second one power is called the reactive power. And it is shown by the symbol Q. Okay, then the third type of power is called complex power. And also we can say apparent power. What is the difference between these two? We will see. Apparent power. Okay, now the complex power is shown by S, but the apparent power is shown by the magnitude of S. So this is a difference. Let's see what the major difference between these two. Okay, so we will start the first by the definition, then formula, and after that we will see the numerical values and for which elements the active power exists, for which elements reactive power exists, and for which element both power exists. We will see everything related to the power. ठीक है. So अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो देखिए एग्जाम्पल से हम पहले स्टार्ट करते हैं. Suppose I'm having a voltage. Suppose you're having a circuit where load is this L load, and we are having a voltage V that is equals to V angle theta V. Okay, and similarly I am having the current that is equals to I angle theta I. Okay, यहाँ तक. Now it is your load Z. ठीक है. So if you start from the complex power, okay, if you start from the complex power rule, then we will have the complex power, the SH equals to B into I complex conjugate. So first I define the complex power. So complex power is what? Complex power is defined as the product of RMS value of voltage and current and complex conjugate of current. So this is the first definition of the complex power. Okay, now your complex power can also be written as the complex sum of the real and the reactive power. Okay, so up to here just we have the complex power and what is the definition of the complex power. Now if you apply the complex power rule here, then complex power is what? S is equals to V bar into I bar complex conjugate. Now if you put the values of these three, then we will have, it is V angle theta V. Now it is having V angle, sorry, it is I angle theta I and complex conjugate of that. Okay, so if we take this V theta V I angle minus theta I. Okay, so just take the product of magnitude and angular, add or subtract according to the property. So it is theta V minus theta I. Okay, so from this load I just find the complex power and it is what? It is VIN. Now the product of these two things, the product of the magnitude of the voltage and current is termed as your what? Apparent power. So we will also define your apparent power. So apparent power is what? Apparent power is the product of
apparent power is the product of the magnitude of voltage and current. So it is the apparent power and it is theta v minus theta I. आई होप सो यहां तक बात क्लियर होगी। अब अगर हम आगे बात करें तो इसको मैं अगर एक्सपेंड करता हूं तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो लेट्स एक्सपेंड दिस थिंग, ओके। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, देखिए तो मैं इधर लिख रहा हूं नाउ इट इज मॉड एस cos थीटा v माइनस थीटा I प्लस j sin थीटा v माइनस थीटा I। ठीक है यहां तक। नाउ if you multiply s with cos theta, then it is s cos theta v minus theta I, then it is j mod s sin theta v minus theta I। ठीक है यहां तक। Now it is on the right hand side, on the left hand side we have x. Now if you take s is equals to, it is p plus jq, okay। So it is, now what is the p? P is what? P is mod s cos theta v minus theta I. Now q is what? Mod s sin theta v minus theta I. Similarly I can write this, it is vi cos theta v minus theta I, and we have vi sin theta v minus theta I। यह तो बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर की डेफिनेशन की बात करें, सो योर एक्टिव पावर इज द फर्स्ट डेफिनेशन जो है बात करें, एक्टिव पावर इज डिफाइंड एज द पावर व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ द voltage and current and the cosine angle between the voltage and current। तो अगर मैं डेफिनेशन फर्स्ट की बात करूं, यहां पर डेफिनेशन फर्स्ट, एक्टिव पावर इज डिफाइंड एज, एक्टिव पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ voltage and current। active power is defined as the product of voltage and current and cosine angle between voltage and current। ठीक है यहां तक बात। तो ये होगी डेफिनेशन नंबर 1 फॉर द एक्टिव पावर। क्लियर है। अब अगर मैं रिएक्टिव पावर को डिफाइन करूं, सो रिएक्टिव पावर की डेफिनेशन क्या है? रिएक्टिव पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड साइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो यहां पर अब मैं डेफिनेशन देखता हूं क्या है। रिएक्टिव पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ voltage and current and sine angle between voltage and current, ठीक है यहां तक बात। सो वी जस्ट डिफाइन द एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, क्या होगी? एक्टिव पावर इज द रियल पार्ट ऑफ द complex power and the reactive power is the imaginary part of the apparent power। So let's define the next definition number 2। definition number 2 की बात करें, active power may also be defined as the real part of the complex power। ठीक है यहां तक बात। इसी तरीके से अगर मैं apparent पावर को डिफाइन करूं तो देखिए क्या डेफिनेशन होगी यहां पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ओके, सो रिएक्टिव पावर डेफिनेशन नंबर 2। रिएक्टिव पावर is defined as reactive power may also defined as the imaginary part
imaginary part of the complex power, of the complex power. होपफुली ये डेफिनेशन समझ में आ रही है। नाउ अब देखते हैं हमने थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डेफिनेशन। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है डेफिनेशन का, वो देखते हैं। बाकी ये तो हमने देख ही लिया है ये क्या होती है एपरेंट पावर, और यहां पर मैं जो है एपरेंट पावर को और डिफाइन कर दूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। सो यहां पर ये तो हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स पावर की डेफिनेशन, बट एपरेंट पावर को मैं और लिख देता हूं। नाउ इट इज फॉर कॉम्प्लेक्स पावर। नाउ एपरेंट पावर is defined as the product of voltage and current. But what current? What the product? RMS. In RMS, just keep in mind it is RMS product. Okay. होपफुली ये डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। अब अगर मैं थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं कि हमारी एक्टिव और रिएक्टिव पावर क्या होंगी, तो देखते हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं लैगिंग लोड और लीडिंग लोड का कंबाइंडली, जिससे कि थोड़ा सा और डेफिनेशन को क्लियर करें, क्योंकि हम डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डेफिनेशन मिलेंगी, तो स्टूडेंट जो होता है कंफ्यूज रहते हैं कि इसी बुक में तो ये लिखी है, किसी बुक में ये लिखी है, तो है क्या एक्चुअल। तो उसको कवर करने के लिए मैं सारी डेफिनेशन एक जगह इकट्ठी कर रहा हूं और एक जगह देखिए कैसे इकट्ठी होती है। सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल। नाउ सपोज आई एम हैविंग ए लोड वेयर द करंट इज लैगिंग विद सम एंगल, इट इज V and it is I, okay, that is phi, but it is lagging, okay. Now similarly if you, पहले तो हम इसी को कवर कर लेते हैं, it is our current at some angle lagging power factor. Now if you break this component, if you take the horizontal and vertical component of this current, then this is your horizontal component, this is called I cos phi. ठीक है, यहां तक क्लियर है। Similarly if you take this component, then it is what? I sin phi. ठीक है। Now so this is called horizontal component. What component? Horizontal component, ठीक है। यहां तक इसको मैं क्या बात करूं, इसको बोलते हैं हम वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। यहां तक इट इज वर्टिकल कंपोनेंट। नाउ अब जरा ध्यान रखिएगा क्या करते हैं। नाउ this horizontal and vertical component language is used in your mechanics part, where we have to resolve the force into two parts, the vertical part and the horizontal part. In electrical, the horizontal component is called active component. What component? Active component of current. Active component of current, okay. Similarly the vertical component is called the reactive component. Reactive component of current, okay. So clearly define कर दिया है कि in electrical the horizontal component is called the active component of current and the vertical component is called the reactive component of current. Now let's take the formula of the powers, okay. Now P is equals to, we have written V RMS I RMS cos थीटा V माइनस थीटा, ठीक है। यहां तक अब अगर मैं इसको सही से और लिखूं, यहां पर देखिए ऊपर लिख दे रहा हूं VR को ऐसे लिख दे रहा हूं और IR को ऐसे लिख दे रहा हूं, cos थीटा V माइनस थीटा, ठीक है। यहां तक नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? एक्टिव पावर may be defined as the product of RMS value of voltage and the active component of current. So we will define your third definition is what? Definition number third. So active power is defined as the product of voltage and active component of current.
current. ठीक है यहाँ तक? That's why its name is active power. Okay. Similarly, if you define the reactive power, then reactive power is what? Q is equals to Vrms Irms sine theta v minus theta I. Now let it is Vr into Ir into sine theta v minus theta I. Okay. So if you define the reactive power is what? Reactive power is defined as the product of the RMS value of voltage and the reactive component of current. That's why its name is reactive power. Okay. So I will just write the third definition of the reactive power here. Okay. I hope so. ये बात समझ में आ रही होगी अब आप लोगों को कि क्या definition कैसे बनी है. So I just take definition number third. Okay. So reactive power is defined as the product of voltage and reactive component of current. ठीक है यहाँ तक? सो इसको इस कंपोनेंट की वजह से कि अगर हम करंट के रिएक्टिव कंपोनेंट से वोल्टेज को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन इट्स नेम इज रिएक्टिव पावर. होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी. सो अगर मैं एक्टिव की बात करूं, एक्टिव पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट एंड कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज and current. Similarly, active power is defined as the real part of the complex power, or if you more define, then active power is defined as the product of voltage and the active component of current. That's why it is called active power. Similarly, अगर मैं reactive power की definition की बात करूं तो reactive power की definition क्या होगी? Reactive power is defined as the product of voltage and current and sine angle between them. Similarly, अगर दूसरी definition में बात करूं, reactive power is the imaginary part of the complex power. Clear है? अगर अगली हम बात करें तो अगली बात जो होगी हमारी reactive power is also defined as the product of voltage and the reactive component of current. That's why its name is reactive power. अब थोड़ा सा और जानकारी ले ली जाए एक्टिव और रिएक्टिव और apparent power के बारे में. Now, what the physical meaning of the true power, real power और एक्टिव पावर. नाउ अब अगर डेफिनेशन को और अच्छा करना है, द पावर विच इज ऑलवेज कन्वर्टेबल और विच परफॉर्म सम वर्क डन is called the active power. ध्यान से सुनिएगा बात. The power which is always convertible, that is the power which can be convert from one form to another form, or which always perform some work done, that is called the active power. कैसे ये बात होती है देखते हैं. अगर आप देखें, हम फैन लेते हैं या मोटर लेते हैं तो मोटर में क्या होता है? मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाती है. So the power which is convert from one form to another form and perform some work done, that is called एक्टिव पावर. तो जो फैन है हमारा या जो मोटर है उसमें हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी. तो कौन सी जो पावर ट्रांसफर हो रही है, कौन सी पावर कन्वर्ट हो रही है? एक्टिव पावर. क्लियर है? एक्टिव पावर ही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो सकती है? कन्वर्ट हो सकती है. तो अगर इसका फिजिकल मीनिंग देखा जाए, दूसरा अगर एग्जांपल देखें, अगर हीटर में बात करें, हीटर में क्या होता है? हम हीटर में इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर जो है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीट में. सो योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर इज कन्वर्टिंग इनटू व्हिच फॉर्म? हीट. एंड ओके, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द एक्टिव पावर. एक एग्जांपल और देखते हैं. अगर देखें, अगर हम बल्ब की बात करें, किसकी बात करें? बल्ब की बात करें. So the power in bulb, the power is what power is converting? Electrical power is converting into light. And also with heat. Okay, so the power which can be convert from one form to another form and perform some work done is called the active power. I hope so. अब ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव पावर क्या होती है. क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करें, so reactive power, the reactive power is that power which do not perform any work done, okay, and it is called the lossless power. It is called lossless
power. Okay, the reactive power is that power which do not perform any work done, and it is called lossless power, but it is necessary for a system to transfer power from one place to another. अगर सिस्टम में ये पावर नहीं होगी then you cannot transfer your active power. कैसे भाई बात देखते हैं. अगर सपोज हमने A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या लगा दिया, अगर हमने कोई A पॉइंट से बीच के A और B पॉइंट के बीच में कोई लगा दिया रेजिस्टेंस, और अगर हम पावर को ट्रांसफर करें, क्या करें, पावर को ट्रांसफर करेंगे, तो जो रेजिस्टेंस है वो तो एक्टिव एनर्जी को पूरा कंज्यूम कर जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा, तो स्टैंड तो कुछ करेगा ही नहीं, ट्रांसफर तो कुछ करेगा ही नहीं. सो अगर बात करें, अगर हमें सिस्टम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर पावर का या एनर्जी का ट्रांसफर कराना है, तो हमारा जो कपलिंग मीडियम है वो कैसा होना चाहिए, रिएक्टिव, क्योंकि रिएक्टिव ही जो पार्ट है या एलिमेंट है वो एक्टिव पावर को कंज्यूम नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. सो मीनिंग क्या है, रिएक्टिव पावर इन योर सिस्टम इज नेसेसरी टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. क्लियर है बात. सो रिएक्टिव पावर जो है सिस्टम में कोई वर्क डन तो करेगी नहीं, ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, बट इट इज नेसेसरी to transfer active power from one place to another place. That's why in your system, to transfer power from point A to point B, the coupling medium should be reactive element, not resistive element. ये क्वेश्चन भी आ चुका है कहीं ना कहीं एग्जाम में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारा जो कपलिंग मीडियम है वो कैसा होना चाहिए, रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए. क्लियर है बात. सो एक्टिव पावर डिफाइन कर दी हमने, रिएक्टिव पावर डिफाइन कर दी, एंड वी हैव ऑलरेडी डिफाइन द कॉम्प्लेक्स एंड एपरेंट पावर. आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी. अब अगर हम कुछ यूनिट की बात कर लें, क्योंकि हमने डेफिनेशन डिफाइन कर ली, फॉर्मूले डिफाइन कर लिए, अब हमें है यूनिट की बात करनी, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है यूनिट भी पूछ ली जाती है. तो मैं यूनिट की बात करता हूं. देखिए यूनिट क्या क्या हो सकती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट और कॉम्प्लेक्स पावर की. सो एक्टिव पावर की जो यूनिट्स हैं, मैं यूनिट्स को यहां लिख रहा हूं, ठीक है. यूनिट ऑफ एक्टिव पावर, जरा ध्यान दीजिएगा. अगर हम स्मॉल से लार्ज की तरफ चले, देन वी हैव नैनोवाट, माइक्रोवाट, मिलीवाट. So these are the units that is used in electronics communication. Okay, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये यूनिट यूज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर जो कंजम्पशन है वो क्या है, स्मॉल है. अगर हम बात करें हम इलेक्ट्रिकल, अपने वाट, किलोवाट, मेगावाट एंड गीगावाट. So these are the unit used in general unit of electric. General unit. Okay, now these are the unit which are used in power plant, okay. So we have the unit of the active power is either nanowatt, microwatt, milliwatt, watt, kilowatt, megawatt and gigawatt. Where they are used, I have just mentioned all the things. Okay, so ये होगी इसकी यूनिट के बारे में. क्लियर है. एक चीज की और मैं बात करूं, टरबाइन की जो यूनिट है आपकी, जो टरबाइन है, दैट इज आल्सो रेटेड इन टर्म्स ऑफ किलोवाट और मेगावाट. इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, अरेंज और मैचिंग द एलिमेंट्स विद देयर यूनिट्स. सो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी. क्लियर है. सो ये यूनिट से हो गया. अगर हम मोटर की देखें यूनिट एचपी, और 1 एचपी जो इक्वल टू होता है, तो वो कितना होता है, 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट. So motors are also rated in terms of watt or in terms of active power. Okay. Next अगर हम देखना चाहें तो क्या देखेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है रिएक्टिव पावर. सो रिएक्टिव पावर की यूनिट देख लेते हैं क्या क्या होंगी. ठीक है. सो यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, तो अगर रिएक्टिव पावर की यूनिट में देखूं तो रिएक्टिव पावर इज व्हाट, वोल्टेज एंड करंट. सो इट इज वोल्टेज इनटू करंट. And what is the sign? Sign is what? Reactive component. So it is called VAR. So VAR means what? Voltage ampere reactive component. That's why its unit is VAR, not it is WAR, that is युद्ध. Okay? तो यहाँ VAR का मतलब ये नहीं है. अगर इसी को और डिफाइन करें हम, if you are taking voltage in kilovolt, then it is kVAR. So it is called kVAR. If you take voltage and current in kiloampere, then it is 10 की power 6. Then it is called MVAR. It is
MVAR. Okay, so where you have seen such type of unit? आपने ऐसी यूनिट कहीं देखी है? यस, हमने ऐसी यूनिट देखी है जो कैप्स्टर्स आर यूज्ड to improve power factor, and they are rated in terms of MVAR, KVAR और VAR. That means जितने भी जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस है या हम कह सकते हैं कंपनसेटिंग एलिमेंट है जो आपके पावर सिस्टम में, कंपनसेशन टेक्निक, सीरीज कंपनसेशन, सेंट कंपनसेशन, सीरीज कंपनसेशन, लाइक दैट. ओके, सो कंपनसेशन जितने भी यूनिट पढ़ेंगे या एलिमेंट पढ़ेंगे उनकी यूनिट किस में होगी? या तो केवीआर में होगी या एमवीआर में होगी. होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी. सो यूनिट भी क्लियर हो गई होंगी. अब अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, कॉम्प्लेक्स पावर और एपरेंट पावर की यूनिट की बात करते हैं, तो देखिएगा, the unit of voltage is voltage and unit of current is volt. So it is the first unit of the complex or apparent power is VA. Okay, volt ampere. The next unit if you take voltage in kilovolts, then it is kVA. Okay. Similarly, अगर आप जो voltage और current दोनों को किलो एम्पियर और किलो वोल्ट में ले लें, then it is MVA. Okay, so MVA. अब ये यूनिट कहीं आपने देखी है? Yes. Transformer are rated in terms of kVA, MVA, like that. ट्रांसफार्मर देखा है आपने? तो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो किसमें है? kVA, MVA. अगर आप रिले देखें, रिले का जो बर्डन है वो दिया जाता है VM में, दैट इज वोल्ट इनटू एम्पियर. ऐसी बहुत सारी जगह है जहां आपने ये यूनिट देखी होंगी. सो आई जस्ट डिफाइन ऑल द यूनिट्स एंड definition with respect to each and every power. अब हम वन बाय वन चेक करते हैं कि कौन से एलिमेंट के लिए कौन सी पावर होती है या नहीं होती है. वो देखेंगे हम अपने नोट पॉइंट की फॉर्म में. इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, सपोज द पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं यहां पर कि वाई यू आर टेकिंग S इज इक्वल्स टू V इंटू I कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इसका भी आंसर देखेंगे. और ये ध्यान रखिएगा, योर कॉम्प्लेक्स पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला. इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं. ये क्यों लिखा जाता है मैं बताऊंगा. ठीक है, तो पहला तो हमारा क्वेश्चन यही आ गया, व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग योर कॉम्प्लेक्स पावर लाइक दैट. देन वी विल सी द PQ वैल्यू फॉर द डिफरेंट एलिमेंट. Then the next part we will see what the difference between your average power and the instantaneous power, and last one we will see the power triangle for all the elements, कि किस एलिमेंट के लिए पावर ट्रायंगल क्या होता है. सो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे इसके पावर्स में. और पावर्स के लिए हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि डेफिनेशन तो हमने देख ही ली है. अब इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट हैं उनको हम पॉइंट फॉर्म में देखेंगे, या कह सकते हैं नोट पॉइंट के फॉर्म में देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपने नोट पॉइंट्स रिलेटेड टू पावर. तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट से. सो वी विल डिस्कस द नोट पॉइंट